most of us experience that rock bottom in our life where we feel like what am I supposed to do now? मतलब जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब करना क्या है basically. Like you have tried everything you could have. सारे efforts डाल के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया. Even you were so sure that कि जब हम ये कर रहे हैं यू विल डेफिनेटली गेट द एग्जैक्ट आउटकम, है ना. इतना श्योर थे, कोई एग्जाम दिया, लाइक यू वर सो श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट 90%, बट 90 नहीं आता है. तब जो हमारा रॉक बॉटम हिट होता है लाइक लाइफ में, यू नो वी थिंक दैट इट्स द एंड ऑफ लाइफ, लाइक अब करना क्या है. बट व्हाट इफ आई से दैट rock bottom is not the end of life. It is a reset button for your life. I'm not saying that rock bottom isn't the worst experience. It is. It is like, it is the worst experience one can have in their life. But what if I say that everything is an experience in life? No? Everything is an experience in life. And when you start to feel things or you start to see things differently, they will eventually end up making some other meaning, which is very common. एक सेम ही वर्ड किसी सेंटेंस में किसी तरह यूज होता है और दूसरे सेंटेंस में दूसरी तरह यूज होता है. सो it's just about perspective in life, I believe. I might sound very cliche to you, but hear me out. Because everything is going well in our lives, we rarely question the lives we are living. You know, we keep going. We follow the same routine, same steps, बस वैसे ही same सारा कुछ करना है. But when you hit the rock bottom, you have the chance to like start new. सब कुछ start से. When we are at rock bottom, what if we start asking ourselves that if I could start everything again, what would I choose now? That is the answer to your true life. And believe me or not, that is the hidden gem of hitting the rock bottom. मतलब जब सब कुछ ही, you know, it's all done. It's all done. I remember the college I studied in, I never wanted to come here. But the hidden gems I found, like the greatest friendships of my life, I found here. I've met so many crazy people here that I would carry them throughout my life. I will definitely want to talk to them for life, चाहे मैं कहाँ पे भी हूँ. And then I have met so shitty people here that जो मैंने experiences यहाँ पे learn करे हैं, शायद मैं कहीं और ना कर पाती. So you know, मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ आना मेरा लाइक मैंने रॉक बॉटम हिट कर दिया. अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. आई वॉज वेरी 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 सैड कि मुझे तो यहाँ नहीं आना था. बट मुझे उस रॉक बॉटम से जो मिला, मेरी जो नई पर्सनालिटी अब बन चुकी है, मेरी जो ये नई आइडेंटिटी है, दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी. मे बी सब चीजें, ये जो भी मैं अभी लाइफ जी रही हूँ, मैं जो भी सब कुछ अभी चल रहा है, मे बी वो ना हो पाता. सो यू नो वी नीड टू find the hidden gems in life, be it anything, be it any situation in your life, be it any experience or the worst experience in your life. कुछ भी हो जाए, every situation, everything has certain things hidden in them. मुझे तो यही लगता है. And I would always tell other people around me कि यू नो जैसे सब देख रहे हैं ना, वैसे देखो, वैसे समझो. बट मे बी अपने जो भी थॉट्स होते हैं, दे आर सम ऑफ एवरीथिंग वी हियर, वी सी, वी एक्सपीरियंस. मतलब सब कुछ उसका गोल मोल करके वो हमारे थॉट्स बन जाते हैं. बट कई हमारे रियल थॉट्स भी होते हैं, कुछ हम रियल वाला भी कुछ होते हैं. एंड जब हम वो उस चीज का वो जो टेस्ट एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, लाइक व्हेन यू टेस्ट दैट आइसोलेशन, व्हेन यू टेस्ट दैट सॉलिट्यूड इन लाइफ, उसके बाद इट्स ओवर फॉर एवरीवन एल्स. Like they cannot do anything wrong to you. You will always feel like हर चीज एक experience है. Like you are left with nothing. And when you are left with nothing, it means you are zero. When you start from zero, you have nothing to lose, but so much to gain. So much to gain. Like that is the fresh start to your life. Whatever I am today, I was not like this my whole life. I was not like this. I have been very aggressive in my life. But it's like, you know, the patience I have now, the understanding of things I have now, the intellect I carry now is all gift of hitting rock bottom. Rock bottom ही ना hit करा होता तो यार आज ऐसा कुछ होना ही नहीं था. आज मैं ऐसे, मतलब मुझे जो बात करनी आ रही है, मुझे जैसे भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आ रहे हैं, मुझे जैसे भी किसी को कुछ भी बात कहनी आ रही है, शायद मेरे को ये कभी भी ना आती. हिटिंग रॉक बॉटम इज डेफिनेटली द वर्स्ट एक्सपीरियंस. आई विल नॉट लाई. फेलियर इज पेनफुल. लूजिंग समवन इज पेनफुल. एक्सपेक्टिंग समबडी टू लव यू इज पेनफुल. बट यू नो, जब रॉक बॉटम हिट कर लिया तो उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा या उसके बाद जो भी मिलता है, दैट इज द गोट फीलिंग. एंड उसमें इट्स लाइक वट एवर यू विल गेट नाउ,
now it is the least you will expect, but you will get so big things. मतलब जब expect ही नहीं कर रहे, जब expect कर रहे थे तब चीज मिली नहीं, but अब जब expect ही नहीं कर रहे, अब you are like so surrendered in nature कि ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, it's all fine, then you will get that thing. So in that, whatever the emotional attachment you carry to things and people vanishes. So you are just left with your true self and the true need of that thing. मतलब तब तुम्हें समझ आ जाता है कि is it even worth, और सिर्फ ऐसे ही it was just an attachment or it was just time pass, fun. Like it's not just about human relations, it's about your career, your success, your money, and a lot other things also. Yeah. And this time when you start with experience. Technically, you are not starting with zero. You are starting with experience. You are starting with things you have learned. You know what hurts you. You know what things you tolerated and you do not want to tolerate them anymore. You know when to walk away. You know when to leave people. You know when to leave things. And you know when to trust God. Like, apna wo, it's finished. And now, this new version of your life is waiting for you to build it. To build it your way, from experience, from your learnings. So now you know, rock bottom isn't the end, it's the reset button of your old life. I hope I added some good values to your life, to your mindset, and that's all. See you next Sunday. Probably not on 5, late he, but I will definitely see you. Take care.